Good morning to all of you. Today, we have already started about the Nazism and rise of Hitler. I think it's a very important topic and very interesting topic also. Hitler का नाम सुनने के बाद आप we are very you know we have lot of anxiety and lot of knowing aspect of about Hitler. You want to know many things about Hitler, and he was this Germany. Basically, Hitler was used to call as a savior of German. Okay, so my topic is the effects of war. You should have along with you the pencil or the copy, right? So that I can give you some points about the effects of the war. Then we will discuss in length and breadth, right? Now, war का कोई ना कोई effect होता है. Basically, वो negative हो, whatever the positive, it is always some type of effects you have. Now, the effects of the war, if the First World War both psychologically and financially affected Europe in the following ways. There were two world wars, right? 1914 to 1918, 1939 to 1945, and in which First World War was very much affected, and a lot of effects were there. That effects was basically on the Europe. The first point was Europe became a continent of debtors from creditors. पूरा यूरोप उधार के रूप में चल रहा था. उधार बहुत हो चुका था यूरोप के ऊपर, राइट? दैट इज यूरोप बिकेम अ कॉन्टिनेंट. इट्स वाज बिकेम ए कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स. जो क्रेडिट उनको देते थे वो डेटर्स में बदल चुके थे. Then Weimar Republic was forced to pay a huge compensation. Weimar Republic basically Germany को ही कहा जाता है, right? So Weimar Republic was forced to pay a huge compensation after First World War. Then socialists, Catholics, Democrats who supported the Weimar Republic were criticized and came to be known as November criminals. A question आता है कभी कभी, what do you mean by November criminals? So write down socialists, Catholics, and Democrats who supported the Weimar Republic were criticized. उनको criticize किया गया and came to be known as November criminals. उनको November criminals कहा जाता था, right? By the conservative nationalists. जो conservatives होते थे, पुराने ख्यालात के होते थे, nationalists होते थे, वो उनको criticize करते थे. किनको? Catholics को, socialists को, Democrats को. Then, after the First World War, soldiers were placed above civilians. Soldiers को they used to pay a lot of respect to the soldiers, and they were above the civilians. देखिए दो चीजें हैं, आर्मी एंड सिविलियन. आर्मी जो होती है ना वो एक डिसिप्लिन में होती है ज्यादातर. सिविलियंस आपको पता ही है, you know better. After the First World War, soldiers were placed above civilians. उनको civilians से ऊपर रखा जाता था. And the media glorified, media press, जो पेपर वगैरह था, न्यूज़पेपर, जो पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इनको हम मीडिया कहते हैं. So after the First World War, soldiers were placed above the civilians and media glorified. Glorified का मतलब उनको बहुत अच्छे से उनको पेश करना, उनकी ग्लोरीफाई करना, उनकी प्रशंसा करना, राइट? सो ग्लोरीफाइड देयर ट्रेंच लाइफ. ट्रेंच लाइफ का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रेंच होता है अ लॉन्ग डीप hole dug in the ground. जब आपको ना अपने आप को, जब कभी ना लड़ाई होती है, if some war is there, then they used to dug a big hole inside the ground अपने आप को बचाने के लिए, तो उसे ट्रेंच कहते हैं, right? So civilians and media glorified the trench life. वो जो वहाँ पे trench life होती थी ना, उनको glorify करते थे, but trench life was very horrified life. बहुत डरावनी लाइफ होती थी, but in the reality they lived miserable life in the trenches. असल में उनकी trench life बहुत it was a miserable, बहुत दयनीय हालत होती थी. The people who were fighting, the soldiers who were fighting in the trench. So, but media, they glorified the people,
They glorified their trench life. They put, soldiers above the civilians. But in reality, it was just opposite. Aggressive war propaganda, right? Aggressive war propaganda and national honor occupied the public attention. Aggressive war propaganda war को बहुत काफी glorify किया गया था, and national honor occupied the public attention. Support grew for the conservative dictatorships. There were supports grew for conservative dictatorship. Right now, again I repeat, Europe became a continent of debtors from creditors. This is the first point. Then Weimar Republic was forced to pay a huge compensation. जर्मनी को बहुत बड़ा compensation pay करने को कहा गया. Socialists, Catholics, and Democrats who supported the Weimar Republic were criticized and came to be known as Nuremberg criminals. उनको Nuremberg criminals कहा जाता था. And I told you about who were the Nuremberg criminals. By the conservative व nationalists उनको Nuremberg criminals कहते थे. After the First World War, soldiers were placed above the civilians, and media glorified their trench life, but in reality, they lived a very miserable life. Next, aggressive war propaganda was there. It's a second last. Aggressive war propaganda was there, and national honor occupied the public attention. National honor. Occupied national honor जो देश उनको honor करता था, they occupied public attention. Support grew for the conservative dictatorship. Support grew for the conservative dictatorship. And the First World War left a deep imprint on Europe. Here. I give you the enlarge the screen from here. The First World War left a deep imprint, मतलब छाप छोड़ना, on European society and polity मतलब politics, soldiers. They came to be placed above civilians, which I told you. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to aggressive. They used to say the men should be aggressive, strong, and masculine. The teen word yaad rakhiye, jo basically Hitler also says the same thing. The men should be aggressive, men should be very strong, and men should be masculine. Right. And Hitler used to say a little bit more that men should only smile, they should not laugh. They should give a little bit smile only. They should not laugh. That is masculine. The media glorified French life, which I told you earlier also. This is all right. Then we have got a political radicalism and economic crisis. Political radicalism. Political radicalism was only increased by the economic crisis of 1923. 1923 में economic crisis आया, and the birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Separatist League. What do you mean Separatist League? That is a communist group. देखो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, that is sometime I'm here. Political radicalism and economic crisis, uprising and Separatist League. Separatist League जो है basically ये communist group है, ठीक है? So political radicalism was only increased by the economic crisis of 1923. Economic crisis कब आया था? World में 1923 में आया था. This was the time when Separatist League began to rise. Communist group, communism, Lenin, Marx, आपने पढ़ा होगा. रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन को पढ़ा, आपने मार्क्सिज्म को पढ़ा, स्टालिन को पढ़ा. तो उनकी एक सिद्धांत को हम कम्युनिस्ट सिद्धांत कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रशिया इज अ कम्युनिस्ट, चाइना इज अ कम्युनिस्ट, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, राइट, दैट इज कम्युनिस्ट वन. फाइन. Spartacist League was based on pattern of Bolshevik revolution in Russia. The people of Berlin demanded for Soviet-style governance. The people of Berlin, जानते हो कहाँ पे? Berlin है Germany के अंदर.
The people of Berlin demanded for Soviet style governance. जैसे सोवियत में गवर्नेंस होती है, तो बर्लिन के लोगों ने उसको वैसा ही डिमांड किया कि हमारे यहाँ पर भी वैसा ही गवर्नेंस होना चाहिए. The people of Berlin demanded for Soviet style governance, and the Weimar Republic suppressed the uprising of the Spartans League with the help of the war organization called Free Crops. The Spartacists later founded the Communist Party. इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी को लेके आए. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी यहीं से शुरू हुआ था. ठीक है. The political atmosphere in Berlin was charged with demand for Soviet style governance. देखो यहाँ पे लिखा हुआ. Here. The political atmosphere in Berlin was there and was charged with the Soviet style governance. मतलब they demanded the Soviet संघ में जैसे गवर्नेंस है ना, वहां पे जैसे गवर्नमेंट है, वैसे ही गवर्नमेंट बर्लिन के अंदर होना चाहिए, जर्मनी के अंदर होना चाहिए. Those opposed to this, such as the socialists, कौन-कौन से इसको अपोज कर रहे थे? नंबर 1 सोशलिस्ट अपोज कर रहे थे, डेमोक्रेट्स अपोज कर रहे थे, कैथोलिक्स अपोज कर रहे थे. 3 ग्रुप जो है ये इनको अपोज कर रहे थे कि यहाँ पे सोवियत जैसा यहाँ पे गवर्नेंस नहीं होना चाहिए. सोवियत में कौन सा गवर्नेंस है? कम्युनिस्ट गवर्नेंस है, राइट. तो वहां पे ऐसा कम्युनिस्ट जो है, देखो एक बात बताओ, बेसिकली जर्मनी इज आल्सो डिवाइड. अर्लियर इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ईस्ट जर्मन, वेस्ट जर्मन. वेस्ट जर्मन वाज अंडर द influence of western part of the world, means America, right? Privatization, right? And eastern part was under the Soviet sun, the influence of Soviet sun, right? So इनको कौन अपोज कर रहे थे? सोशलिस्ट अपोज कर रहे थे, डेमोक्रेट्स अपोज कर. डेमोक्रेट एंड कम्युनिज्म, दे आर टू सेपरेट थिंग्स. हाउ टू गवर्न द कंट्री, दैट इज टू सेपरेट थिंग. डेमोक्रेट्स कुछ और चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, और सोवियत संघ कम्युनिस्ट चाहते थे. बेसिकली कम्युनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. एंड कैथोलिक्स, कैथोलिक्स कौन होते हैं? एक होते हैं कैथोलिक्स, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक्स जो चर्च के ऊपर बिलीव करते हैं, चर्च के ऊपर, राइट? कैथोलिक चर्च met in Weimar to give shape to the democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war veterans organization and called Free Crop. The English separatists later founded the Communist Party of Germany. I told you just now. Communists and socialists henceforth became inconceivable enemies and could not make common causes against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists carved the radical solution. Political radicalization. I'm giving you some important point also. German and separately later found Communist Party, which I told you just now. Political radicalization was only heightened by the economic crisis. By 1923, Germany had fought the war largely on the loans and had to pay war repartitions in gold. मतलब जो जर्मनी तो हार गया था, आपको पता है, और उनको कहा गया था कि they have to pay back in the gold because their currency was, the value of their currency was absolutely gone, right? So the depleted gold reserves at a time resources were scarce. In 1923, Germany refused to pay. 1923 में जर्मन ने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए. And the French occupied its leading industrial area to claim their coal. और जर्मन फ्रेंच ने क्या किया कि उनकी जो जर्मनी का जो कोल माइन है, उन्होंने उनको ऑक्युपाई कर दिया. देखिए जर्मनी के अंदर बहुत सारी कोल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तो वो तो गोल्ड में उनको वापस पैसा उनके पास था नहीं, उनकी करेंसी बहुत खत्म हो चुकी थी. Then what to do and how to do? The main part is how to pay back them. So what French government did and France did, that they occupied the coal mines. French occupied its leading industrial area role to claim their coal. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency. अब जर्मनी ने क्या किया कि उनके कोल माइन तो उन्होंने फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया, और जर्मन के पास अब पैसा था नहीं,
तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उन्होंने करेंसी को ह्यूज अमाउंट के अंदर प्रिंट करना शुरू कर दिया. कभी कभी sometime you also think that why India is so, sometime India, it is said earlier that India is a poor, not now, earlier it was said that India was a poor country. I'm giving an example what happened. India is a poor country. Since many of you used to think why don't we print the currency, हम करेंसी को प्रिंट क्यों नहीं करते, तभी अमीर हो जाएंगे. बट करेंसी की एक वैल्यू भी तो हो जाएगी, ज्यादा करेंसी प्रिंट कर देंगे तो हमारे पैसे की, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी. अब आप देखिए यहाँ पे व्हाट हैपेंड ओवर हियर. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency. Here, printed paper करेंसी, ये देखिए लिखा हुआ, राइट. और बहुत ज्यादा इन एक्सेसिव पे उन्होंने पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया, रिस्कलेसली, बिना किसी सोच विचार के. Then what happened with the result? What was the result? What were the consequences? That if you print too much paper currency, then what will happen? With too much printed money in circulation, its value of the German mark fell. जर्मन का जो पैसा था उनको मार्क कहते हैं, जैसे आपको रुपया कहते हैं, अमेरिका में उसके पैसे को डॉलर कहते हैं, राइट. तो जर्मन मार्क फेल इन अप्रैल. The US dollar was equal to 24,000 mark. In July, 3,53,000 mark. In August, just was 4,621,000 mark. And at sometime in December, it was turnover to trillion. $1 ट्रिलियन में बिकती थी. और कहा यह जाता है कि as the value of the mark collapsed, पेपर करेंसी को इन एक्सेस में प्रिंट करने से क्या हुआ कि बेसिकली जर्मन जो मार्क था इट कोलैप्स्ड. शेयर मार्केट डाउन चला गया, शेयर मार्केट बहुत खत्म, बिल्कुल खत्म, कोलैप्स हो गया, क्रश कर गया जर्मनी का. एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब प्राइसेस जो थे सामान के बहुत बढ़ गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पैसा कम उसके दाम कम हो जाए तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है. For example, you purchase earlier you purchase same 10 rupees, अब उसका दाम बढ़ जाएगा, 20 rupees हो जाएगा, right? So prices of goods sold, the image of German carrying cartloads of currency notes to pay a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. मतलब समझ में आया आपको? एक ब्रेड खरीदने के लिए वो पूरा का पूरा ट्रंक से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ ट्रंक पैसा लेके जाते थे. एक ट्रंक होता था, एक सूटकेस होता था, या घोड़ा गाड़ी होती थी फुल ऑफ मनी. किसके लिए? एक ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी, राइट. सो cartload of currency notes to buy a loaf of bread were widely publicized and evoking worldwide sympathy. अब worldwide sympathy शुरू हो गया किसके अगेंस्ट? किसके लिए? जर्मनी के लिए. This crisis came to be known as hyperinflation. Hyperinflation मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब किसी भी चीजों का दाम बढ़ जाना. हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाना. यू आर अनेबल टू कंट्रोल द प्राइस, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन. हम कहते हैं ना कभी कि इतना हाइपर मत हो, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना. तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है सामान का दाम कई हजार गुना बढ़ जाना. So Germany was facing this type of crisis. This is war effect of First World War. You got it? A situation when prices rise phenomenally high. अब prices जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. Okay. Eventually, the Americans intervened. अब यहाँ पे क्या एक सीन क्रिएट होता है कि क्योंकि सिंपैथी बढ़ गई थी उनके लिए. बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर द जर्मन्स, सो अमेरिका वांटेड टू सपोर्ट इट. America want to help whom? Germany. So eventually the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing Davos
डावस प्लान, ये है डावस प्लान। कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल में भी कि डावस प्लान क्या होता है, क्या था डावस प्लान। जर्मनी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए जो प्लान इंट्रोड्यूस किया गया उसे डावस प्लान कहते हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंडेड, bailed Germany out of the crisis of introducing a Davos plan, which revoked the terms of repatriation to ease the financial burden on Germany. This was Davos plan to ease the German burdens. जर्मन के ऊपर जो इतना बर्डन पड़ चुका था उसको कम करने के लिए डावस ने एक प्लान, डावस वाज इकोनॉमिस्ट एंड इवन अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट आल्सो, so he introduced this plan for the Davos plan. So this was another part. Now, years of depression. Now, the years of depression में क्या है कि the years between 1924 to 1928 saw some stability. Why it was stable? Because Americans helped it. American government helped Germany. Yet this was a built on sand. मतलब ये जो 4 साल थे ना, ठीक है, अच्छे थे, but it was not effective because something happened now. What happened? German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange क्या है? आप पूछोगे सर Wall Street Exchange क्या है? It was the name of the world biggest stock exchange located in, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएस है, उसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते हैं। अब भी जब आपके जो पैसा है ना, एवरी डे यू विल फाइंड दैट हाउ मच मनी इज, सपोज $1 इज हाउ मच रुपीज, डॉलर के हिसाब से पैसे को गिना जाता है, वर्ल्ड का पैसा भी डॉलर के हिसाब से गिना जाता है। वह यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है वहाँ पे शेयर मार्केट है, वो क्रैश कर गई, वो खत्म हो गई, सपोज मान लो खत्म हो गई, क्रैश कर गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश एंड इन 1929, कब वो क्रैश किया? 1929 के अंदर। देन fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, डर गए वो कि उन्होंने इतने शेयर खरीदे तो अब all will be in wash basin. So what happened? They are frantically, मैंने डर के मारे उन्होंने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। Fearing a fall in price, people made frantic efforts. Frantic efforts में डर के मारे जो हम काम करते हैं ना, उन्होंने अपने के सारे शेयर बेचने शुरू कर दिए, to sell their shares. On one single day, 24th of October, 13 million shares were sold. So this is the height of apprehension. Is a height of apprehension. मतलब डर क्या होता है कि एक दिन के अंदर 13 मिलियन शेयर बिक गए, राइट, ऑन कब? 24th of October को। This was the start of Great Economic Depression. Now, Great Economic Depression इसको कहते हैं। कभी के क्वेश्चन आता है ना, what do you mean by Great Economic Depression? इसे Great Economic Depression कहा जाता है। Over the next 3 years, between 1929 and 1932, national income of the USA fell by half. नेशनल इनकम जो थी ना यूएसए को, वैसे आप यूएसए को कैसे देखते हो? यूएसए को आप डॉलर के रूप में देखते हो। डॉलर क्या है? एक मेजरमेंट है पूरे वर्ल्ड के करेंसी का, डॉलर के हिसाब से उसे गिना जाता है। वैसे पाउंड जो है, इट वाज मच मोर वैल्यूएबल देन द डॉलर इफ यू कंपेयर इट, बट इट इज अ मेजर है डॉलर का। सो वर्ल्ड वाइड डॉलर के हिसाब से लिखा जाता है, यूरो भी है, right? So 1929 to 1932, national income of USA fell by half. Factories shut down. Effects बता रहा हूँ आपको, consequences बता रहा हूँ क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के अंदर। Factories shut down. Then USA national income fell by half. Exporters fell. एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं जो, उनको वो बिल्कुल नीचे आ गए, एक्सपोर्ट खत्म हो गया। किसका? यूएसए का। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी। स्पेकुलेटर जो पैसा लगाते हैं किस पे? शेयर के मार्केट के अंदर। स्पेकुलेटर्स
money from the market. From the market. The effects of this recession मतलब जो घटनाएं घट रही थी, ये जो पैसे की कमी आ गई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था, वैल्यू बहुत बढ़ गए थे लोगों के पास, इनकम खत्म हो गई थी, शेयर मार्केट डाउन चला गया था, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया था, ऐसा रिसेशन कहते हैं, right? So of this recession in the US economy were felt worldwide. ये सब इकोनॉमी जो है, ये जो इफेक्ट हुआ था, सब अमेरिका के अंदर नहीं, it was not accepted in America. It was felt that throughout the worldwide, that in 1929 के अंदर there is a famous economic crisis from 1924 to 1928. And 3 years, 1929 to 1932, it was economic depression. The German economy was worst hit by the economic crisis. सबसे ज्यादा hit किसको किया? German economy. By 1932, industrial production was touched to 40% of 1929 level. Workers lost their jobs, were paid reduced wages. दाम बढ़ते चले गए पर उनको पैसा कम कर दिया क्योंकि there was no money in the world market, right? So the number of unemployed touched an unprecedented 6 million. 1 million 10 lakh, 6 million 60 lakh, right? Unemployed touched an unprecedented 6 million. On the streets of Germany you could see men with placards around their neck. वो लिखा होता था willing to do any work. कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है. अपनी गले में पट्टा बांध लेते थे, कार्ड लगा लेते थे, unemployed and willing to do any work. So this was the condition of German people. Today you are watching that German is one of the best good economic market, good economies. Once upon a time during after First World War, what condition was there? See the picture over here. Here, see the picture. A man sleeping on the line during the Great Depression. The unemployed could not hope for either wage or shelter. On winter nights, when they wanted a shelter over their head, they had to pay to sleep like this. ऐसे भी सोएंगे तब भी उनको पैसा देना पड़ता था. Feel the depth. इसको सोचो, इसको महसूस करो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाए, इकोनॉमी गिर जाए किसी देश की, तो what happened over there? You feel it about it, right? So willing to hit the person, they used to write down willing to do any work. Unemployment or employed youth placards or simply sat at the street corner desperately queued up at the local employment exchange as jobs disappeared. These are the consequences of Great Depression. Job disappeared, the youth took to the criminal activities and total despair became commonplace. Total despair. बिल्कुल लोग हताश हो चुके थे, उदास हो चुके थे, निराश हो चुके थे. No hope was there. That is called despair. When there is no hope nearby you, that is called depression. Depression में लोग चले जाते हैं ना, when there is no hope. What do you mean by depression? People commit suicide also, right? What is the meaning of depression? When there is no hope. So people were despair. They were watching this, there is no hope. The economic crisis created deep anxieties. One is apprehension, one is anxiety. Anxiety means what is going to be happening. Apprehension does, right? Anxiety and fears in people. The middle class, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish. खत्म हो चुके थे उनके savings when the currency lost its value. Right, currency lost its value. Currency की value खत्म हो चुकी थी. Smaller businessmen, the same self-employed and retailers suffered as their business got ruined. Yeah, yeah. So here
I came to an end of, and I give you a little bit. I give you homework. Your homework will you have to read first this part. The rest of the part you will read yourself. What is going to if I do it, then you will not do it. Page number 55 आप पढ़ेंगे. Hitler's rise to power. Page number 56 आप पढ़ेंगे. Page number 57 I will I will do it along with you. But I will touch. Don't worry. I will go along with you. But you have to read so that you should not be blank. What happened? So हमने पढ़ा कि basically what we have done it. We have done basically the effects of war. I told you political radicalism and economic crisis. I told you what do you mean economic crisis when your currency fell at the low ebb मतलब बिल्कुल last किनारे पे पहुंच जाती है. And what were the effects? Total absolutely depression in the minds of the people, despairiness, and there is no hope. That is the economic crisis. So कब हुआ था 1929 से 1932 के बीच में हुआ था. And the year of depression कहा जाता है 1929 to 1932 में. National income USA fell down, and the effects of this recession in the US economy were felt worldwide. और यूएस इकोनॉमी के जो वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट ओनली यूएस के अंदर नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड में हुआ. आई टोल्ड यू लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, गले में उन्होंने जर्मन मार्क बिल्कुल नीचे गिर गई. बिकॉज एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ पेपर्स पेपर करेंसी बहुत ज्यादा पब्लिश होनी शुरू हो गई थी. तो this was here, and tomorrow we will start from basically page number. I gave you some work at page number 55, 56 आप पढ़ के आएंगे. This is your work. Then I will start from the page number 58, but I will touch whatever you have done. Till then, take care and have a nice time. I will give you the